Okay, we're going to start. Somebody needs to confirm if you are able to see the screen. Yes, sir. Great. Thank you. Thank you, Numan. Okay, so we are going to start off from where we left last time. Very quick review of the example that we did last time. So we talked about these. We talked about these, criteria to measure the network performance, and one of those was delay, throughput, and the packet loss. So one of those was delay, and we were just dissecting what the delays are, which consists of largely 4 components, and we talked in detail about the transmission delay as well as the propagation delay. Okay, we will very quickly wrap up the transmission delay and propagation delay today with the help of an example, and then we will talk about the queuing delay and processing delay very quickly before moving on to the next section about the layering on the internet. Okay, so we said that these transmission delay and propagation delay both are the properties of the links. Both of these are link properties. Okay? And the queuing delay and the processing delay, these are not link properties. These are because of other reasons, such as traffic mix and whether the switch is good hardware which can operate at a very high speed or not. Okay? So it really depends upon what kind of switch is that. What is the switch internals, how the switch fabric is designed. So we last time spent some time about transmission delay and propagation delay. Transmission delay is dependent upon at what speed the link is operating, not about the length of the link, So transmission delay is related to at what speed, at what bandwidth the link is operating, and we use the term bandwidth as kilobits per second or megabit per second or gigabit per second in this course. Typically, bandwidth in communication systems is used for slightly different purpose, but in this course, we will be using the term bandwidth to indicate how much data per second, So kilobit, gigabit, megabit per second, all of those are the measures of the bandwidth. So transmission delay is dependent upon how fast the link is operating. It is also dependent upon how much data you want to send. Okay, so if the link is operating at 1 megabit per second, that means in 1 second you can inject 1 megabit of data into the link or extract 1 megabit of data out of the link. Okay, irrespective of how long the link is. वो 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, and it could be 100 kilometer or 1,000 kilometer. Okay. So what measures the delay, which is dependent upon the length of the link? For physical transfer of the bits, the bits are generally represented as electrical signals or optical signals, electromagnetic waves. What governs the propagation or the delay which is associated with movement of the bits from Lahore to Karachi? That is not transmission delay. Transmission delay is about what speed the link is operating on. Okay? And the propagation delay is the one which tells you how much time does it take for an electromagnetic pulse to go from point A to point B. And that is defined by the maximum that it can travel is the speed of light. Okay? So the propagation delay is dependent upon the length of the link, and transmission delay is dependent upon how fast the link is operating at, what speed the link is operating at. And we had an example. I will quickly go to that. Before we do that, the bandwidth delay product we defined as the bandwidth is the quantity at which the link is operating on. So the more bandwidth a link is operating at, that means you can inject data into that link at that fast rate. Okay. Agar 10 megabit per second hai, so you can inject data at 10 megabits per second or extract data at 10 megabits per second.
If it is 1 gigabit per second, that means you can inject or extract 1 gigabit of data per second, irrespective of the length of the link. The length of the link tells you what the propagation delay is, and the transmission time or transmission delay is really dependent upon the bandwidth and how much data you want to inject into that. Okay. We also defined this bandwidth delay product, and bandwidth delay product is really, how many bits or what is the amount of data that you have in this pipe from Lahore to Karachi. In this pipe from Lahore to Karachi, how much data do you have in that pipe available? That means the bits or electrical pulses that you have sent from Lahore but have not yet been received in Karachi. And you can see that it is dependent on if the bandwidth is high, that means there can be more outstanding or in-flight bits. Similarly, if the delay is long, propagation delay is long, if the propagation delay is long, if the link is very long, that means there will be more bits into that. Now, why is this bandwidth delay product important for us? The bandwidth delay product is important for us in a situation, consider a situation when something fails and the data within this link just goes to waste. If it goes to waste, somebody who is connected or at this end of the link will need to resend that data, तो अगर बीडीपी बहुत ज्यादा होगा तो उसको बहुत सारा डेटा जो है वो रीसेंड करना पड़ेगा, बीडीपी छोटा होगा तो कम डेटा उसको सेंड करना पड़ेगा. So we had the examples of transmission and propagation delay. I'm not going to cover that again. ये वाली example भी हमने last time की थी, and this really indicates what is the relative magnitude of the transmission delay and propagation delay. So consider a link which has a 1 millisecond of propagation delay, and it is operating at 1 megabit per second. So this 1 megabit per second will tell you, what is the transmission time or transmission delay. Transmission time कितना होगा? By the way, transmission time इस चीज पे भी depend करता है कि आपने data कितना भेजना है. Okay, so the transmission time is dependent upon the speed. Transmission time or delay, same thing. Transmission time is the time that that is dependent upon what speed the link is operating. It is also dependent upon how much data you want to send from A to B. Obviously, ज़्यादा data भेजना है तो उसका transmission time ज़्यादा होगा, कम data भेजना है तो transmission time कम होगा. And this example was showing you the relative magnitudes of transmission delay as well as the propagation delay. ठीक है? So vertical axis पे हमने इसी तरह ये time consider किया और t is equal to 0 से start करती है. So in order to inject one bit into this link, एक bit को inject करने में कितना time लगेगा? We can inject 1 megabits per second. तो एक bit को inject करने में आपका 1 microsecond लगेगा. Time to inject one bit or transmit one bit, only 1 microsecond. ठीक है, ये बहुत छोटा सा टाइम है, यहाँ पे हम शो ही नहीं कर रहे हैं इसको. और उस बिट को प्रोपेगेट करके दूसरी साइड पे जाने में 1 मिलीसेकंड लग जाएगा. So this will be 1 millisecond. This delay would be 1 millisecond, right? This electrical pulse from here goes to the other side. It takes 1 millisecond of time. Now, ये खाली 1 मिलीसेकंड पे हमें ये बिट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिट जब हमने ट्रांसमिट की थी तो एक 1 माइक्रोसेकंड व्हिच इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन 1 मिलीसेकंड, तो 1 माइक्रोसेकंड हमें लगा था उसको इंजेक्ट करने में. तो इसी तरह यहाँ से 1 माइक्रोसेकंड उसको एक्सट्रैक्ट करने में लग जाएगा. सो द टाइम at t is equal to 0, if you start sending the bit, so the bit will be completely available to you at B at 1 microsecond, which is the transmission time of that bit, plus 1 millisecond, which is the propagation delay of that link. ठीक है? So एक bit के लिए तो इतना लगेगा, right? So you can see that the transmission time is very, very small as compared to 1000 times small as compared to the propagation time. Now, अगर मैं इस लिंक की स्पीड बढ़ा देता हूं या इस पे ज्यादा डेटा भेजना चाहता हूं, does not affect the propagation delay. Propagation delay जो है वो वहीं पे 1 millisecond है. Why? Because this is the property of the link is dependent upon the length of the link. उससे मुझे 1 millisecond मिल गया.
वो चेंज नहीं होने वाला अगर मैं इस 1 मेगाबिट पर सेकंड की जगह 10 मेगाबिट पर सेकंड पे भी ऑपरेट करना शुरू कर दूं, या ज्यादा डेटा भी भेजना हो, तब भी हमारा प्रोपेगेशन डिले जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, सो द टाइम टू ट्रांसमिट 800 बिट्स, एक बिट को ट्रांसमिट करने में 1 माइक्रो सेकंड लगता था, 800 बिट्स को ट्रांसमिट करने में 800 माइक्रो सेकंड लग जाएंगे, एंड दैट टाइम इज शोन हियर, दैट टाइम इज शोन हियर। सो ये बिट्स वन आफ्टर द अदर in a pipelined fashion one after the other जा रही हैं। So एक बिट जो आपने यहाँ से लाहौर से भेजी, कराची मिलने से पहले you might have injected a lot of other bits from Lahore, अभी पहली वाली बिट कराची नहीं पहुंची है, so that means there will be a lot of bits in flight, lots of bits in flights। कितनी in flight होंगी? जो भी bandwidth delay product होगा, okay, and the bandwidth delay product here is 1 megabit per second into 1 millisecond, 1 megabit per second into 1 millisecond, that is your bandwidth delay product, okay? So आखिरी वाली बिट यहाँ पे किस वक्त मिलेगी? आखिरी वाली बिट, if you can follow this, ये के टाइम एक्सिस पे चल रही है vertically, so you can see that this is 800 microsecond, this guy is 800 microsecond, okay, and this guy is 800 microsecond, और ये आपके पास 1 millisecond था, तो ये आपको कितनी देर में मिलेगी? ये 800 microsecond, which is 0.8 millisecond, and 1 millisecond, which is the propagation delay, and this is the transmission delay. So आपको 1.8 millisecond के अंदर ये मिल जाएगा। So you can see 1 millisecond propagation delay है और 0.8 millisecond इसके अंदर transmission time लगा। So ये scale पे नहीं ड्रॉ किया हुआ ग्राफ जो है। Now what happens if we operate the link? If we operate the link at, instead of 1 megabit per second, we operate it at 1 gigabit per second. Distance उतना ही है तो 1 millisecond ही propagation delay रहेगा इसमें। Okay. Figure that out. So instead of 1 megabit per second, you are now operating it at 1000 times faster, 1 gigabit per second. 1 gigabit per second पे ऑपरेट करेंगे तो ये जो आखिरी बिट आपको यहाँ पे कितनी देर में मिलनी थी, ट्रांसमिशन टाइम आपका 1000 टाइम्स कम हो जाएगा। सो ट्रांसमिशन टाइम वुड बी 800, आपको बिट्स भेजनी थी 800 बिट्स इनटू 1 गीगाबिट पर सेकंड, सो दैट इज 0.0008 मिलीसेकंड, और वो 1 मिलीसेकंड जो आपका प्रोपेगेशन टाइम था वो उसी तरह है। सो यू कैन सी दैट हियर the propagation time is dominating and the transmission time is very small. Why? Because you have started operating the link at a very fast speed, very fast speed. Now I can slow down the transmission time. एक तो मैंने फास्ट कर दिया ना ट्रांसमिशन टाइम को, कैसे फास्ट किया है? लिंक को मैंने बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं? वापस उसको 1 मेगाबिट पर सेकंड पे ऑपरेट करना शुरू करना। लेकिन लेट्स जस्ट ऑपरेट एट 1 गीगाबिट पर सेकंड, उसको स्लो डाउन करते हैं बाय सेंडिंग मोर डेटा, बहुत ज्यादा डेटा भेज के उसको जो है ट्रांसमिशन टाइम को हम प्रोलॉन्ग करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 100 bytes, which is 800 bits, I want to send 1 gigabyte of file in 100 byte packets, lots and lots of packets. कितने पैकेट्स आपके पास आएंगे? 10 to the power 7 पैकेट्स आएंगे, and this would be one packet after the other. So you can see that now it would take 10 to the power 7 multiplied by this old number, which is 800, which is the size of one packet, into 1 gigabit per second. So ये आपका ट्रांसमिशन टाइम है, और आपका propagation time वो फिर भी 1 millisecond ही है। So now you can see that the transmission time has increased, ये 8000 millisecond हो गया। Why? Because now I have sent lots of data, बहुत सारा डेटा इंजेक्ट करने के लिए, although I am operating at 1 gigabit per second, वहां पे मुझे इंजेक्ट करने के लिए इतना 1 गीगाबाइट फाइल इंजेक्ट करने के लिए मुझे 8 सेकंड चाहिए होंगे या 8000 मिलीसेकंड चाहिए। सो दिस एग्जांपल शोज यू नो 3 एक्सट्रीम सिनेरियोज। एक केस में जो है वो कंपेरेबल है, ट्रांसमिशन एंड प्रोपेगेशन डिले, और दूसरे केस में प्रोपेगेशन डिले इज लॉट हायर, और तीसरे केस में ट्रांसमिशन डिले और ट्रांसमिशन टाइम इज अ लॉट हायर देन द प्रोपेगेशन डिले। इस केस में इन दिस एग्जांपल वी हैव kept the propagation time to be 1 millisecond constant, और ट्रांसमिशन टाइम को हम कम या ज्यादा करते रहेंगे। ट्रांसमिशन टाइम को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं? या तो लिंक को हाई स्पीड पे ऑपरेट कर दें, या अमाउंट ऑफ डेटा जो आपने भेजनी है उसको कम या ज्यादा कर दें। सो अनदर एग्जांपल हियर, if you have a 1000 byte packet,
which you want to send from A to B. So let's say there is a link which is operating at 1 megabit per second and there is a propagation delay of 6 milliseconds. 6 milliseconds. Okay? Propagation delay of 6 milliseconds. The link is operating at 1 megabit per second. I want the answers in the chat window that what is the transmission time? ये जो question mark लगा हुआ है. What is the transmission time? What is the transmission time of one packet? एक packet है 1000 bit का, उसको inject करने में कितना time लगेगा? Answers in the chat window. Answers in the chat window. Are you guys still here? So देखें 1000 बिट का पैकेट है और 1 मेगाबिट पर सेकंड पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ट्रांसमिशन टाइम ऑफ वन पैकेट ये किसके बराबर होगा? ये होगा उस पैकेट का जो साइज है विच इज 1000 बिट्स इनटू 1 मेगाबिट्स पर सेकंड 1 मेगाबिट्स पर सेकंड. सो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर. सर एक सवाल है. जी ये थोड़ा गलत हो गया. ट्रांसमिशन जी ऊपर नहीं आएगा. जी डिवाइडेड बाय 10/6. जी आई एम गोइंग टू इरेज दैट. ये बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट में निकालने लगा था इसमें. So transmission time of one packet would be 1000 or link is operating at 1 megabit per second, 10 to the power 6, which is equal to 10 to the power minus 3 seconds, which is equal to 1 millisecond. टाइम होता है जो अदर एंड पे होता है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं. क्या करते हैं जी? जो उस साइड मतलब ट्रांसमिशन टाइम तो वो होता है ना कि आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है आपके लिंक में, तो जो दूसरे एंड पे होता है जब हम रिसीव कर रहे होते हैं तो वो हम नहीं इसमें ऐड करते. नहीं, वो देखें आप यहाँ पे देखें, अभी आपको पिक्चर बना के दिखा देते हैं. ये आपका टाइम है. दिस इज योर प्रोपेगेशन डिले एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन डिले. तो देखें ये क्यों हम निगलेक्ट कर देते हैं. डबल काउंट उसको नहीं हम कर सकते. व्हाई? बिकॉज ऐसा नहीं हो रहा कि मैं एक बिट भेज रहा हूं और फिर उसके बाद दूसरी बिट, फिर तीसरी, मैं दरमियान में वेट नहीं करता. ये पाइपलाइन फैशन में बिट्स जा रही हैं. So, पहली बिट जैसे इंजेक्ट की मैं दूसरी फौरन, तीसरी, ये सब चली जाती हैं. सो द बिट्स आर गोइंग वन आफ्टर द अदर इन द पाइपलाइन फैशन. वो बिट्स जो हैं वो पाइप के ऊपर ही हैं. जब लाहौर से कराची कुछ डेटा भेज रहे हैं, कुछ दरमियान में बिट्स हैं, फिर आप और इंजेक्ट किए जा रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे आपने पहली बिट, ये मैं एरो लगाता हूं, इस जगह पे आपने पहली बिट इंजेक्ट की और इस जगह पे पहले पैकेट की आखिरी बिट आपने एक्सट्रैक्ट कर ली है. सो थिंक अबाउट इट कि ये t इज इक्वल टू 0 था, तो इसमें ये प्रोपेगेशन डिले ऐड हुआ है और ये ट्रांसमिशन टाइम ऑफ वन पैकेट ये एक ऐड हुआ है. सो ये 6 मिलीसेकंड है आपका और ये 1 मिलीसेकंड. 7 मिली t इज इक्वल टू 7 मिलीसेकंड पे आपको आखिरी बिट मिल जाएगी. Right? Does that answer your question? Yes sir. ठीक है. Okay. Now, so one packet के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हम भेजते जाएंगे. Okay. So this we call a pipe view. यहाँ पे pipe view draw किया हुआ है. On the horizontal axis we have time. इसको ये ना समझें कि ये यहाँ पे ये लिंक आपको कोई फिजिकल लिंक दिखा रहे हैं. यहाँ पे ये टाइम आपको दिखा रहे हैं. सो देयर इज ए ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ईच पैकेट. और ये जो मैंने एरिया शेड कर दिया है, ये जो है दिस रियली डिपेंड्स अपॉन कि बैंडविड्थ कितनी है और कितना डेटा आप भेजना चाहते हैं और कितने स्पीड के ऊपर लिंक ऑपरेट कर रहा है. सो कितना डेटा आप भेजना चाहते हैं और कितनी स्पीड पे लिंक ऑपरेट कर रहा है. ठीक है. सो एक पैकेट इधर यहाँ पर ट्रांसमिट होगा. अगर पैकेट का साइज कम होगा तो वो कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा टाइम के अंदर, वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा. इफ द पैकेट इज बिगर, उसको हम एक और एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं. सो लेट्स से यू वांट टू सेंड 1000 बाइट पैकेट्स फ्रॉम A to B. Let's say the link is operating at 1 megabit per second and there is a 6 millisecond of propagation delay. 6 millisecond of
propagation delay. The 6 millisecond propagation delay hai, and this is the link speed. This is the link speed. Okay. So BDP for this link is 1 megabit per second into 6 millisecond, which turns out to be 6,000 bits. 6,000 bits, which means कि at a time इसके अंदर 6,000 bits available होंगी. जब मैंने एक bit यहाँ लाहौर से भेजी and one after the other bits भेजते जा रहा हूँ, before the first bit reaches Karachi, just before the first bit reaches Karachi, I would have injected 6,000 bits from Lahore. 6,000 bits from Lahore. Yeah. So here I am sending these 1,000 bit packets, और उनका again हमने ये पिछली एग्जांपल में भी निकाला था, 1,000 bit packets, transmission time of one packet ये कितना है हमारे पास? 1 millisecond. Okay. So we'll change this example slightly. Let's say कि मेरे पास ये जो propagation delay है, ये मैंने लिंक को काट के आधा कर दिया, which means कि the propagation delay reduced from 6 millisecond to 3 millisecond. ये 6 millisecond से 3 millisecond पे आ गया. Okay. So ये 6 millisecond था यहाँ पे और उससे ये 3 millisecond पे आ गया. What that means is कि एक तो BDP आपका आधा हो गया. BDP 6,000 से ये 3,000 हो गया. Now 3,000 bits are outstanding. Link is still operating at 1 megabit per second. So there will be some outstanding packets here. अगर आपका 1000 bit का पैकेट था, तो यहाँ पे आपके 6 पैकेट्स आ सकते थे outstanding. अगर आपका 1000 bit का पैकेट है, तो in this case the BDP is 3,000 bits, so you will have 3 packets outstanding. So what happens if I change the bandwidth? अभी तो मैंने क्या किया है? अभी मैंने propagation delay को change किया है, उसको कट डाउन कर दिया 6 मिलीसेकंड से 3 मिलीसेकंड में. How can we do that? We can do that by cutting the link length into half. What if I change the speed at which link is operating at? इस 1 megabit per second को जो है वो हम change करते हैं. So let's say I change it to 3 megabit per second और इसका टाइम जो है वो मैं 1 मिलीसेकंड कर देता हूँ propagation delay. ये और ज्यादा 1/3 करती है इसकी लेंथ, लेकिन now I am operating at 3 megabit per second. So notice that मैंने ये भी क्वांटिटी चेंज कर दी, इस एग्जांपल के साथ कंपेयर करें. In both cases the BDP is 3,000 bits. What that means is कि the bits which are outstanding, जो मैंने सोर्स वाली साइड से भेज दी है, सेंडर वाली साइड से भेज दी है और अभी रिसीव नहीं हुई है डेस्टिनेशन वाली साइड के ऊपर, the maximum number of bits that can be in the pipeline वो 3,000 हो सकती हैं. ये दूसरे केस में भी 3,000 ही हो सकती हैं. However, the picture is different. Why the picture is different? Because now the bandwidth is tripled. That means कि ये देखिए आपकी bandwidth triple हो गई है. जब bandwidth आपकी triple हो गई है और आपने propagation delay को 1 millisecond कर दिया, that means कि each bit which you inject will take 1 millisecond to reach the other end. एक और interesting चीज जो इसके अंदर है, वो आप notice करें कि इसमें ये एक जो पैकेट था, let me is this one, and ये जो एरिया जो मैंने शेडेड शो किया इधर, दिस शोज कि एक पैकेट आपकी टाइम बैंडविड्थ के अंदर कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है. दिस एरिया इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस एरिया, ये जो एक पैकेट का है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एरिया. Why? The bandwidth is taller and it will take less time for that packet to be communicated. ठीक है. अगर मैं पैकेट का साइज ही चेंज कर दूं, तो वो एरिया भी चेंज हो जाएगा. उसकी भी एक एग्जांपल है हमारे पास. So let's say you have 1,000 bit packets again sent on the same link. If instead of 1,000 bit packet we want to send 2,000 bit packets, so each packet will take double the time to get transmitted. 1,000 bit का पैकेट 1 मिलीसेकंड लेता था इसके ऊपर ट्रांसमिट होने में, 1 मिलीसेकंड लेता था. 2,000 bit का पैकेट अब 2 मिलीसेकंड लेगा. So this time here is going to be 2 millisecond instead of 1 millisecond. So ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि link is still operating at 1 megabit per second. Instead of sending 1,000 bit packet, now I'm sending 2,000 bit packet, which will take double the time to get transmitted or injected onto the link. Okay. Sir,
जी 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 अली सर पिछली स्लाइड पे जाएंगे एक मिनट। जी। सर ये जो आपने थर्ड डायग्राम बनाई हुई है इसके अंदर 3 पैकेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3000 बिट है बीडीपी और हमारा पैकेट 1000 बिट्स के हैं। हाँ 3 पैकेट्स होने चाहिए, 3 पैकेट्स होने चाहिए। ठीक है लेकिन सर। ये अगेन डू नॉट कंसीडर दिस कि ये आपका ये लिंक है। ये 3 पैकेट शो करने के लिए होने चाहिए कि आउटस्टैंडिंग 3 पैकेट्स हो सकती हैं। लेकिन थिंक अबाउट इट, यहाँ पे ये जो डायग्राम जो ये शो कर रही है, ये टाइमिंग डायग्राम शो कर रही है। यहाँ पे ये टाइम है, तो ये 3 पैकेट या 6 पैकेट या 10 पैकेट या 20 पैकेट नहीं, ये तो वन आफ्टर द अदर पैकेट्स चलते जाएंगे। मैं तो लाहौर से भेजता जाऊंगा और ये पैकेट्स जो है वो वन आफ्टर द अदर चलते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये भी बहुत सारे पैकेट आते जाएंगे, बहुत सारे पैकेट ये वन आफ्टर द अदर आते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो नाउ we will switch gear and no more discussion on propagation delay and transmission delay. We will give a homework जिसमें थोड़ी सी और आपको practice हो जाएगी. Now another delay that is incurred often in packet switch networks always is the queuing delay. Queuing delay is not the property of the link. Is not the property of the link. How long does a packet have to sit in a buffer before it is processed? Remember हमने कहा था पैकेट स्विचिंग के अंदर you divide the big chunk of data into smaller packets and then over subscribe the link, which means कि वो 10 slots थी, उसमें हमने 35 users डाल दिए थे in the hope that not all of those will be active simultaneously. If the people are not active very often, that assumption is always true. That assumption is generally valid. But once in a while, कभी-कभी ऐसा होगा कि 10 से ज्यादा यूजर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको कुछ बफरिंग करनी पड़ेगी। तो बफरिंग आपको करनी पड़ेगी, सो इसका मतलब है कि यू विल हैव टू stop those packets for a little bit before you can send those on. So how long does a packet have to sit in a buffer before it is processed to be sent forward? So queuing delay pipe view के अंदर कैसे हम शो कर सकते हैं? So ताहा मुज़म्मिल का क्वेश्चन है, can we say propagation delay is constant? If the link length is constant, the propagation delay will be constant. Link length is constant, propagation delay will be constant. Transmission time, if the link is operating at the same speed, the transmission time of a fixed chunk of data will also be constant. अगर डेटा ज्यादा भेजना होगा तो ट्रांसमिशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, अगर लिंक की स्पीड को ज्यादा करेंगे तो ट्रांसमिशन टाइम कम हो जाएगा. So queuing delay in pipe view. So let's say we have a switch here. ये ब्लैक में ये स्विच आपको शो की हुई. So this switch has 2 incoming ports or interfaces and 1 outgoing interface. ठीक है, बड़ा सिंपल सा switch है. Typically you have many incoming ports, many outgoing ports. So this guy is receiving packets from both sources. दोनों तरफ से इसके पास पैकेट्स आ रही हैं, और ये पैकेट्स देखिए, सबसे पहले इसके पास ये वाला पैकेट अराइव होगा, फिर उसके बाद ये वाला पैकेट होगा, फिर ये वाला पैकेट होगा, and you can see that there is sufficient space in here. You can accommodate these packets. So पहले ये पैकेट चला जाएगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, and then ये. So no big deal. ये बड़ा इजी हो गया स्विच के लिए. स्विच ने जो है जैसे जैसे पैकेट्स आते गए हैं, चाहे लेफ्ट से आ रहे थे चाहे राइट से आ रहे थे, तो उनको वो स्केड्यूल करके आगे भेजता गया. Okay, there is no overload in this case. So let's consider the example of an overload. जब ओवरलोड नहीं होगा तो आपको बफरिंग करने की जरूरत ही नहीं है. टेम्पोररी ओवरलोड हो सकता है, टेम्पोररी ओवरलोड इस तरह का होगा. ठीक है, नाउ दिस इज टेम्पोररी ओवरलोड बिकॉज दिस switch can only send 1 packet on this outgoing link, 1 packet at a time. लेकिन हमारे पास ये जो है ना 2 पैकेट साइमल्टेनियसली अराइव कर गए हैं, फिर 2 पैकेट और साइमल्टेनियसली अराइव कर गए हैं. ठीक है, बट वी स्टिल हैव सफिशिएंट स्पेस. ये बहुत सारी हमारे पास स्पेस है जिसको हम यूज कर सकते हैं अगर हम इन पैकेट्स को थोड़ी देर के लिए ओनली टेम्पोरेरीली बफर कर लें, तो बफर कर लेते. सो there is a transient overload in this case. इस transient overload को handle करने के लिए you need to have a buffer where you will buffer the packets. And by the way, in packet switching networks, this is not a rare event. This happens all the time. This will happen all the time. Okay, so you will make a buffer or a queue and you will put the packets in the queue. So एक पैकेट आगे भेज दिया और एक ये देखें, एक पैकेट जो फ्रंट पे 2 पैकेट्स हैं उसमें एक को आगे भेज देंगे और एक को क्यू में डाल देंगे. Now you still have 2 packets. ये फिर आपके पास 2 पैकेट्स आ गए, उनमें से एक और को क्यू में डाल देंगे और एक को आगे भेज देंगे.
एक को क्यू में डाल दिया और एक को आगे भेज दिया। किसको क्यू में डालना है, किसको आगे भेजना है, ये स्विच के ऊपर है, उस पे उसके स्केड्यूलिंग के ऊपर डिसाइड करेगा। हो सकता है किसी को प्रायोरिटी दे, हो सकता है किसी को ना प्रायोरिटी दे, कौन सा पहले अराइव किया उसको देख ले। इट कैन बी मैनी पॉलिसीज, बट एट द हाई लेवल व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास 2 पैकेट्स है, यू कैंट सेंड 2 पैकेट्स साइमल्टेनियसली ऑन दिस आउटगोइंग लिंक, यू विल सेंड 1 पैकेट एंड यू विल बफर द अदर पैकेट। तो अब देखें क्यू का साइज जो है वो 2 हो गया, एक पिछली स्लॉट वाला पैकेट था और एक ये वाला पैकेट। सो नाउ व्हाट यू वुड लाइक टू डू इज के अब आपके पास खाली जगह आ गई है, यू नो देयर इज नो पैकेट एट द हेड ऑफ दीज एनी ऑफ दीज इनकमिंग क्यूज। तो ये राउटर को जो है जरा सुकून मिलेगा, वो कहेगा ठीक है अभी मैं क्यू को खाली कर देता हूँ, तो वो क्यू को पहला खाली करेगा, फिर दूसरा वाला खाली करेगा। मीनवाइल अनदर पैकेट हैज अराइव्ड एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, और जैसे ही वो आएगा वो फिर उसको भी भेज देगा और बाकी भी उसके पीछे भेज देगा। सो ट्रांजिएंट ओवरलोड था, ट्रांजिएंट ओवरलोड को हैंडल करने के लिए वी हैड अ क्यू, एंड दिस क्यू is always there in all the internet switches, routers, सब के अंदर ये available होती है। This will handle all the temporary overloads. जी क्वेश्चन जी मोहित। सिंपल क्यू होती है, ये प्रायोरिटी क्यू या कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें अप टू द इम्प्लीमेंटेशन, ये राउटर की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक होता है, सॉरी सिर्फ होती है लाइक प्रायोरिटी होती है कि कौन सी मतलब पैकेट पहले भेजना है, ऐसा कुछ होता है? as I said कि ये राउटर की इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकता है, वो प्रायोरिटी भी दे सकता है, वो पैकेट के अंदर देख के और उसके मुताबिक भी प्रायोरिटी असाइन कर सकता है। दिस इज ऑल पॉसिबल। जो आर्किटेक्चर्स होते हैं राउटर्स के, we will briefly talk about the router architectures in a later chapter. डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन scheduling डिटेल्स जो हैं वो राउटर के अंदर वो प्रायोरिटी को देख के कर सकते हैं। ऐसे राउटर्स हो सकते हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं, और यू कैन कॉन्फ़िगर द राउटर्स टू गिव प्रायोरिटी टू सर्टेन टाइप ऑफ पैकेट्स। इसमें हम फॉर एग्जांपल पर्पल पैकेट्स को जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू। ग्रेट। सो क्यू absorbs the transient burst। ट्रांजिएंट बर्स्ट जो आ गए हैं ये क्यू ने अब्सॉर्ब कर लिए हैं। हाउएवर उसने क्या किया है, क्यूइंग डिले इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्यूइंग डिले जो इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज one of the delays that we often see, almost always see in the internet. Now the big thing about this queuing delay is that kyunki the traffic is arriving, it's a random traffic which is arriving here, okay? और ये तो सिर्फ एक switch शो किया है। Internet is a very complex structure with thousands and thousands of routers and links. वहाँ पे from one source to destination you can have many links on the way, many switches on the way. उनके अंदर किस तरह क्यूज होंगी, कहाँ पे कितनी ट्रैफिक आ रही होगी, दिस इज ऑल रैंडम। तो सिंस दिस इज ऑल रैंडम, द अराइवल ऑफ ट्रैफिक इज रैंडम, वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू ए डेडलाइन कि ये इतनी देर में जो है ना ये आपका पैकेट आगे चला जाएगा। एंड देयर कैन आल्सो बी सिचुएशंस वेयर यू हैव अ क्यू व्हिच इज ओवरलोडेड। ये देखें आपके पास दोनों लिंक्स जो हैं ये ओवरलोड कर रही हैं, ये हमेशा पैकेट भेजते जा रहे हैं, maybe some popular event happening. So if there is a continuous overload, persistent overload, what will happen कि ये जो आपने बफर लगाया हुआ है वो बफर आहिस्ता फिल होता जाएगा। कितना फिल होगा? इतना फिल होगा कि बफर की जितनी आपने वहां पे स्पेस एलोकेट की है मेमोरी में के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इसको, सो दैट मेमोरी विल एग्जॉस्ट और फिर आपको पैकेट्स ड्रॉप करने पड़ जाएंगे। ओके, so will eventually drop the packets when the queue will get full. Okay, and this is an example of congestion. Okay. So queuing delay is how long does a packet have to sit in a buffer before it is processed. And this depends upon the traffic pattern. Traffic pattern means के at what rate packets are arriving, किस रेट के ऊपर अराइव कर रहे हैं, और वो रेट जो है वो चेंज भी होता रहता है। मैं किसी यूजर को ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो हर 1 मिलीसेकंड के बाद एक पैकेट भेजें। नहीं, यूजर की मर्जी है, वो जब उसकी मर्जी होगी, जब उसके पास पैकेट भेजने होंगे वो भेज देगा। कभी होगा 10 पैकेट साइमल्टेनियसली भेज देगा, वन आफ्टर द अदर, राइट, वन आफ्टर द अदर। फिर ये होगा कि 3 मिनट तक 4 मिनट तक कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो पैकेट भेजेगा ही नहीं बिल्कुल भी। सो यू कैन हैव ए बर्स्टी काइंड ऑफ अ बिहेवियर। सो अराइवल के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। So nature of the arriving traffic के ऊपर whether it is bursty or not bursty, and it is also will be dependent upon the transmission rate of the outgoing link.
outgoing link is operating at high speed, that means I can inject more packets onto that outgoing link. If the outgoing link is operating at a lower speed, that means I cannot eject too many packets simultaneously. बहुत तेजी से मैं उस पे packets जो है वो eject नहीं कर सकते. So in that case, the transmission rate of the outgoing link will also be dictating कि आपका queue size कितना होगा. You can probably guess कि if you decrease the outgoing link rate, जिस rate के ऊपर outgoing link आपका operate कर रहा है उसको decrease कर देंगे तो queue size जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. So queuing delay को characterize कैसे करते हैं? This is characterized with statistical measures. Average queuing delay हम मालूम करते हैं, variance उसकी मालूम कर सकते हैं, the probability that the delay exceeds a threshold value, एक threshold value से वो exceed कर देगा, इसके अंदर आप queuing theory के principles इस्तेमाल कर सकते हैं. We will not go into too much detail of those, और courses के अंदर वो cover होता है, but briefly we will talk about this. So let's say we have an arrival process, how the packets are arriving, and the average arrival rate. That doesn't mean that they are arriving at a constant rate. They are arriving at a rate whose average is lambda in packets per unit time, and there is a peak rate of p. कभी वो उससे ज़्यादा भी हो जाती है. So if W is the average time the packet has to wait in the queue, कितनी देर के लिए उसको packet को wait करना पड़ेगा queue के अंदर, and you can well imagine that this W is also not constant. This W is also variable. It depends upon कि आपके packets का जो arrival process है वो किस तरह का है. So W is for the waiting time, and we are using this W for the average time that the packets wait in the queue. Okay, so the instantaneous value of W will be instantaneous value of the wait time will be varying. उसकी जो average अगर निकाल लें उसको हम W से denote करते हैं. Similarly, L is the average number of packets which are waiting in the queue. So the size of the queue will keep on changing. वो instantaneous size उसका जो है वो variable होगा. उस सारे की over a long period of time अगर हम average निकालें तो उसको हम L से denote करते हैं, which is for the length of the queue. So you can probably guess कि ये W और L related होंगे. अगर W ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि शायद L भी ज्यादा होगी. If there is a long queue, then you will probably have to wait for a longer period of time. If the queue is long, you will have to wait longer. If the queue is short, you will have to wait for a shorter period of time. And in fact, there is a very nice result, which is called Little's law, which relates this W with L, and this lambda is that constant. So W and L को relate करने के लिए you have this Little's law, which relates L and W by this formula. We are not going to derive this here. Okay, an example of this is if the arrival rate is 1,000 packets per second. That means on average, every second you have 100,000 packets are arriving. The average time a packet spends in the buffer is 1 millisecond. The average time a packet spends in the buffer is 1 millisecond. Okay? So this is W, which is 1 millisecond. Okay, and this is lambda. Okay? So the average queue size, you can compute that L would be equal to this 100,000 times 1 millisecond, which is 100 packets. So ये L को calculate कर सकते हैं यहाँ पे. Similarly, if L is given and W is given, you can calculate lambda. L is given and lambda is given, you can calculate W, and very simple relationship, Little's law. Now, let me also very quickly talk about the queuing process. Queuing process हम जो है हमने कहा कि the size of the queue would really be dependent upon the queuing process. क्यूइंग प्रोसेस का क्या मतलब है? अराइवल प्रोसेस को अगर आप देखें तो क्यूइंग प्रोसेस ऐसे अराइवल और डिपार्चर पे डिपेंड करता है. सो व्हाटएवर अराइव्स हैज टू डिपार्ट. एक स्विच के ऊपर जितना डेटा आ रहा है उस डेटा ने बाहर चले जाना है. ठीक है, जितना डेटा आया है और अभी तक वो बाहर नहीं गया उसको क्यू करना पड़ेगा. दैट इज वेरी सिंपल. योर क्यू इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाटएवर हैज बीन अराइव्ड एंड व्हाटएवर हैज बीन डिपार्टेड. अराइवल और डिपार्चर के दरमियान जितना डिफरेंस है, that has to be queued. वो आपको क्यू करना पड़ेगा, as long as you are not dropping any of the data. So let's say
if we denote with a of t, and why I call it a of t, it's a function of time. Time के साथ साथ जो है ना वो change होता है. This is the cumulative number of bits arrived until time t, and you can see that a is a non-decreasing function. Why? Because this is cumulative. ये bits आपकी आती जा रही हैं. देख लें कि एक टाइम t तक जितनी bits आ जाती हैं, टाइम t तक जितनी bits आ जाती हैं उसको a of t कहते हैं. t को और इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कुछ और बिट्स आ जाएं. So you can notice that a of t is a non-decreasing function. Similarly, d of t is the number of bits that have departed the switch. Okay. So d of t is the number of bits that have departed the switch. एक टाइम t के ऊपर a of t is the number of bits that have arrived. d of t is the number of bits that have departed. What happened to the difference? That difference has to be queued. उसको हमने Q में डाल दिया, उसको हम Q of t कह देते हैं. So Q of t, the size, Q of t is the difference between A of t and D of t. So you can also see that since A of t is a variable, जो time के साथ साथ change होता जा रहा है, D of t is also time के साथ साथ change होता जा रहा है. Depend करता है कि आपकी output किस rate के ऊपर operate कर रही है. A of t also depends upon कि किस rate के ऊपर traffic arrive कर रही है. So Q of t is the difference between A of t and D of t. You cannot have more departures than the arrivals. So Q of t will always be a non-negative number. It can be zero. जो कुछ आया था सब कुछ depart कर दिया आपने. It can be zero, but Q of t would be always non-negative. A of t और D of t का जो difference है, this would be your Q of t. Okay, final processing delay. Processing delay का क्या मतलब है? Processing delay का मतलब ये कि when you have a switch and you have some incoming links and some outgoing links. इस switch के ऊपर let's say you receive a packet. यहाँ से एक पैकेट आपके पास आता है, इस साइड से ये आपके पास पैकेट आया और उसको यहाँ पर आउटपुट जानी है. So when this packet comes here, हमने आपको पहले बताया था कि if every packet in packet switch network will include the destination IP address. उसके ऊपर destination address लिखा होगा. So इस राउटर ने, इस switch ने ये decide करना है कि इस पैकेट को किधर भेजना है. So the time that this switch takes to process that, to find out what is the destination, plus the time that it takes to copy this packet from an incoming interface to an outgoing interface, वहां से बिट्स उठा के कॉपी भी करनी है और यहाँ पे उसको भेज भी देना है. ठीक है. सो भेजने वाला टाइम तो हम इंक्लूड नहीं करते, बट द प्रोसेसिंग टाइम इंक्लूड्स हाउ लॉन्ग डज द स्विच टेक टू प्रोसेस दैट पैकेट. प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो हो सकता है इस पैकेट के अंदर जो है वो एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखा है, तो इस राउटर को एक अपना टेबल इसने मेंटेन किया हो, उस टेबल के अंदर उसको लुकअप करनी पड़े. उस लुकअप करने के बाद जो है उसको पता चले ओ इसको आउटगोइंग इंटरफेस नंबर ये 1 2 3 है, इंटरफेस नंबर 3 पे भेजना है, आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 3 पे भेजना है. कैसे पता चलेगा? ये इस टेबल से पता चलेगा. इस टेबल के अंदर क्या लिखा होगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस की एक लिस्ट होगी और साथ आगे आउटगोइंग इंटरफेस नंबर होगा. हु विल पॉपुलेट दिस टेबल? सम राउटिंग प्रोटोकॉल विल पॉपुलेट दिस टेबल, जो हम लेटर ऑन किसी चैप्टर में देखेंगे कि राउटिंग टेबल्स कैसे पॉपुलेट होते हैं. सो दिस स्विच विल हैव अ टेबल जिसको वो कंसल्ट करेगा और फिर उसको कंसल्ट करने के बाद उसको पता चलेगा आउटगोइंग इंटरफेस 3 इज द डेस्टिनेशन फॉर दिस पैकेट. उस पैकेट को वो इनकमिंग इंटरफेस से रिसीव किया है उसने, उससे कॉपी करके आउटगोइंग इंटरफेस 3 पे डाल देगा. ये सारा जो प्रोसेसिंग का टाइम है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले. नाउ पैकेट्स कम वन आफ्टर द अदर. देखिए पैकेट एक दूसरे के पास आते रहते हैं. सो इफ यू हैव a terabit link, 1 terabit per second link, 1 terabit per second link के ऊपर पैकेट्स आते जा रहे हैं, and packets are coming in very very fast because the link is operating at 1 terabit per second. So the size of a packet, smallest size जो इंटरनेट के ऊपर पैकेट का होता है वो 40 bytes का होता है, approximately 40 bytes का होता है. So 40 byte का पैकेट 1 terabit per second के ऊपर ये जा रहा है. सो 40 बाइट्स का मतलब ये है कि अबाउट 320 बिट्स. 320 बिट्स. सो 320 बिट्स आई 1 टेराबिट पर सेकंड के रेट के ऊपर. कितना टाइम लगेगा उसको? 320 डिवाइडेड बाय 1 टेरा.
1 टेरा, ये कितना बन जाता है? मैं 1 टेराबिट जो है वो बल्कि नहीं करते, हम इसको जो है ना और थोड़ा स्लो कर देते हैं, ये तो बहुत ही कम टाइम आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं। लेट्स सी, इसको हम 100 gigabit per second, which is still very fast, and 100 gigabit per second links are very very common. 1 टेराबिट के लिंक भी एग्जिस्ट करते हैं, बट 100 gigabit per second links are very common. 10 gig का तो लम्स के अंदर भी अवेलेबल है. So 100 gigabit per second. So 320 divided by 100 gig. 320 divided by 100 gig. This is 3.2 nanoseconds. 3.2 nanoseconds. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो 40 बाइट का एक पैकेट था, वो अराइव किया, वो 3.2 नैनोसेकंड के अंदर अराइव किया, और पीछे उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3.2 नैनोसेकंड की है. इस लिंक के ऊपर उसकी ड्यूरेशन 3.2 नैनोसेकंड की है, ट्रांसमिशन टाइम उसका इतना ही होगा. उसके पीछे एक और पैकेट आ रहा है, उसके पीछे और एक और पैकेट आ रहा है. व्हाट दैट मींस इज कि यू हैव 3.2 नैनोसेकंड्स, यू हैव 3.2 नैनोसेकंड टू डिसाइड कि ये जो 40 बाइट का पैकेट है, इसको मैंने ये लिंक आउटगोइंग 3 पे भेजना है. क्या क्या काम करना है आपने इस 3.2 नैनोसेकंड में? 3.2 नैनोसेकंड में आपने वो पैकेट रिसीव करना है, इस टेबल के अंदर लुकअप करनी है, और टेबल के अंदर लुकअप करने के बाद आपने इस पैकेट को डेस्टिनेशन पे भेज देना है. ठीक है. एंड फॉर डूइंग ऑल ऑफ दैट वर्क, इस यहाँ पे कॉपी करेंगे आप किसी हार्डवेयर के ऊपर, आउटगोइंग नेटवर्क कार्ड की मेमोरी बफर के ऊपर कॉपी करेंगे. ये सारा कुछ काम करने के लिए आपके पास सिर्फ 3.2 नैनोसेकंड्स है, सिर्फ 3.2 नैनोसेकंड्स. Yeah. So that means your switch better operate very fast, better process this thing very fast. ये जो I have a switch on my table, जिसके साथ ये डेस्कटॉप भी कनेक्टेड है, ये आईपैड भी कनेक्टेड है. ये स्विच जो है वो 2000 रुपए से कम का था, पता नहीं 1800 का था या 1500 का था. ये 3.2 नैनोसेकंड के अंदर जो है एक पैकेट को आगे नहीं भेज सकता, ये कभी नहीं भेज सकता. This guy will take a very long time to forward a packet from one interface to another interface. But I just wanted to give you a idea about the time scales at which the routers would be working on, or the switches will be working on. So we typically assume that this is negligible. This processing delay is negligible at the macro level. And really 3.2 nanosecond in the life of a packet is pretty small a time. It's pretty small a time. Even if you have many switches in between, एक सोर्स से डेस्टिनेशन, मैं यहाँ से यूरोप एक पैकेट भेजता हूँ, रास्ते में लेट्स से कि 15 राउटर्स आ जाते हैं. 15 राउटर्स अगर आ भी जाएं, वो हर एक जो अगर 3.2 नैनोसेकंड या 10 नैनोसेकंड डाल रहा है, तो नो बिग डील, कोई इतना से बहुत ज्यादा टाइम नहीं. सो प्रोसेसिंग डिले जो है वो अक्सर बहुत स्मॉल ही होता है, एंड वी नीड टू कीप इट स्मॉल एज वेल. ओके, सो move on to the next set of slides. So इस set of slides में we will talk about more internet architectures, and first of all I would like to talk about the layered internet structure. We gave an example in one of the earlier lectures. पहले दूसरे लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल दी थी कि ये लेयरिंग होती है, एप्लीकेशन और फिजिकल का था, और फिर हमने कहा कोई और भी लेयर्स हैं. I will try to motivate that with the help of an example. Okay? और वो एग्जांपल्स क्या हैं? एक मेल डिलीवरी सिस्टम जो रेगुलर मेल होती है, डॉक से, TCS से या फेडेक्स से आपका की मेल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वर्सेस द ईमेल डिलीवरी सिस्टम. एंड आई विल ट्राई टू कंपेयर दीज टू and try to decompose the task in each of these systems. दोनों के अंदर more or less एक जैसा काम हो रहा है. ठीक है, एक केस में इलेक्ट्रॉनिक डेटा जा रहा है, दूसरे केस में फिजिकल इंफॉर्मेशन जा रही है. फिजिकल इंफॉर्मेशन एक मे बी लेटर लिखा हुआ है वो जा रहा है, एक कोई नोटिस जा रहा है, समथिंग लाइक दैट. स्नेल मेल, फिजिकल मेल आपको जा रही है. So let's try to decompose the task. And the inspiration for this is, let's say there are two companies, and in one company it's the CEO A of a company wants to send data to CEO B of another company. Okay, वो एक लेटर उसको भेजते हैं, और
एक तो पॉसिबिलिटी ये खुद ही जाके दे, लेकिन सीईओ है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो ये करे, तो उसने क्या किया होगा, किसी सेक्रेटरी को रखा होगा, ओके, और सेक्रेटरी से कहा होगा कि you go and make sure that this gets delivered to CEO B. Okay, so CEO A will write letters to CEO B and folds the letters and hands those to the secretary. Secretary का क्या काम है? Secretary will put the letters in envelopes with CEO B's full name, उसका पूरा नाम डालेगा. Now आपने शायद थोड़ा इसको जो है वो नोटिस करना शुरू कर दिया होगा कि ये हम पैकेट्स के साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि ये सीईओ बी का फुल नेम डाला है. दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि मैंने शायद आईपी एड्रेस डाल दिया वहां पे, पैकेट के अंदर आईपी एड्रेस डाल दिया, एंड देन सेक्रेटरी विल गिव इट टू द पोस्ट ऑफिस. ये फेडेक्स को दे देगा या वन ऑफ दीज मेल डिलीवरीज, टीसीएस को देगा, डीएचएल को, किसी को भी दे सकते हैं. सो फेडेक्स को दे देगा. So FedEx का ऑफिस क्या करेगा? They have their own network, just like in the internet. You have their own network. FedEx का उसी तरह से अपना एक नेटवर्क है, बिल्कुल इंटरनेट की तरह का, लेकिन इंटरनेट जो है वो it's an infrastructure to carry data. FedEx का जो नेटवर्क है, it's an infrastructure to carry envelopes or physical envelopes. ठीक है. So FedEx वाला क्या करेगा? They will put the letters, जो मैंने उसको लेटर दिया, जो एक सीईओ ए ने उसको लेटर दिया, बल्कि उसके सेक्रेटरी ने उसको लेटर दिया, उसको बहुत सारे और लेटर के साथ मिलके एक बड़े एनवेलप में डाल देगा, जिसको हम फेडेक्स एनवेलप कहते हैं. ये बड़े बड़े से एनवेलप होते हैं. एंड देन थिंक कि यार इसको एक दूसरे सिटी में जाना है, तो दूसरे सिटी वाले एक बड़ा सा बैग बनाएगा, बड़ा सा एनवेलप बनाएगा, फेडेक्स एनवेलप, उसके अंदर डाल देगा और नेम एंड स्ट्रीट ऑन द फेडेक्स एनवेलप, नेम और स्ट्रीट उसके ऊपर डाल देगा. मे बी देयर आर अदर people who are going to receive the same FedEx envelopes, and they will put the packaging detail on the packages on the FedEx delivery truck after putting the packaging detail on that big envelope. Okay, and the FedEx will deliver to the other company. So think of this way. Okay, there is data that you want to send, a packet you want to send. ये application आपकी जो है वो secretary को दे देगी. We will identify who is the secretary. We will identify कि secretary कौन होता है यहाँ पे. Think of it कि आपका वेब ब्राउजर है, वो वेब ब्राउजर के ऊपर आपने लिखा http www.cnn.com and then you send a packet जिसके अंदर वो एड्रेस लिखा हुआ है. वो पैकेट किसी के पास चले गए. ना उसकी जॉब है कि वो आगे FedEx को दे दे. ठीक है. And then we will break through it. So पार्ट ऑफ द लेटर क्या बन रहा है हमारा? सीईओ ने सेक्रेटरी को दिया, सेक्रेटरी ने FedEx को दिया, और FedEx का एक पूरा नेटवर्क है यहाँ पे. We are not going into the detail of that, लेकिन वो will. So FedEx ने अपने दूसरे एंड के ऊपर पहुंचा दिया, दूसरे सिटी में, जिसने दूसरी कंपनी के पास जो FedEx का ऑफिस था वहां चला गया, और वहां पे FedEx ने डिलीवर कर दिया फार एंड के सेक्रेटरी को. एंड दैट सेक्रेटरी विल गिव द लेटर टू द अदर सीईओ ऑफ द अदर कंपनी. ठीक है. ये सीईओ ए था, ये सीईओ बी आ गया. ओके. नाउ नोटिस दैट कि सीईओ, ये जो ग्रीन के अंदर हमने शो किया है, सीईओ ए वांटेड टू टॉक टू सीईओ बी, इसलिए उसने लेटर भेजा था. ठीक है. वो डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया उसने. ठीक है. बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका ब्राउजर cnn.com का जो वेब सर्वर है, अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस होती है उस वेब सर्वर की, तो आप डायरेक्ट ही उसको दे देते. बट आपने डायरेक्ट नहीं उसको देना, आपने भी जो है वो सेक्रेटरी को देना है. अभी हमें पता नहीं कि इंटरनेट के अंदर जो है वो सेक्रेटरी कौन है. ठीक है. सीईओ ने सेक्रेटरी को दिया, सेक्रेटरी ने FedEx को, और FedEx वाले ने अपने नेटवर्क पे उसको ट्रांसफर कर दिया. दूसरी साइड पे सेक्रेटरी को मिला और सीईओ को मिल जाएगा. सो दैट व्हिच मींस कि एट द सेंडिंग एंड यू आर मूविंग द इंफॉर्मेशन जो आपने दूसरी साइड पे भेजनी है, यू आर मूविंग द इंफॉर्मेशन डाउन द स्टैक. इसको मैं स्टैक क्यों कह रहा हूं कि ये देखें 3 चीजें स्टैक हुई हुई हैं यहाँ पे. एक ये सीईओ का स्टैक का लेयर है, एक सेक्रेटरी की स्टैक की लेयर है, और नीचे एक पूरा FedEx का नेटवर्क है. ठीक है. मे बी उसके अंदर भी 1 2 3 4 कितनी लेयर्स होंगी, अल्लाह जानता है. ठीक है. सो वो विल सी कि FedEx के अंदर की कितनी लेयर्स हैं. बट it is important to realize कि CEO A was only interested in talking to CEO B. The secretary was only interested in talking to the secretary. The FedEx guy was only interested in talking to that FedEx guy in that other city, जहां पर ये दूसरी कंपनी जो CEO B है,
उसकी कंपनी के नजदीक जो है. So CEO wanted to send the letter to CEO. Secretary wanted to send the envelope to the secretary, एक small envelope है, and many of those envelopes will be packaged by the FedEx guys in their large envelope. इस तरह के ये छोटे छोटे काफी सारे envelope उस बड़े envelope FedEx envelope के अंदर आ जाएंगे and will be shipped to the other side. Okay, so the CEO wanted to deliver the semantic content to the other CEO, जो letter का content है, ठीक है. Secretary was only interested in the identity of the other secretary, and the FedEx was interested in the location, कि मैं उस location तक पहुंच जाऊं कि जो उस secretary के नजदीक है, जो उस company के अंदर काम कर रहा है. Okay, so we use this terminology very often. It's called peers in the same layer. You can see that there are 3 layers here. Peers in the same layer understand the same things. ये जो letter CEO A ने CEO B को लिखा है, secretary उसको understand नहीं करेगा, उसको जरूरत नहीं है अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि CEO का वो लेटर जो है वो CEO B के लिए डायरेक्टेड है. ओके, सो these peers in the same layer, they are talking to each other. Your web browser is talking to the web server software at cnn.com, जो कहीं दूर दराज होस्ट हुई है, cnn.com के डेटा सेंटर में होस्ट हुई है. ठीक है. The physical wire which is probably handled by FedEx type या उसके equivalent जो भी है, ये वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उसको हैंडल कर रहे हैं. These guys will be talking to each other. Okay, so the peers in the same layer understand the same things. The data that you are sending from your web browser, http www.cnn.com/latest-news/today's date/top stories, you can request that content. Okay? And the other CEO will understand that, just like the web server understands that. Okay? No one else need to understand that. ये secretary को जरूरत नहीं है कि content क्या है उस letter का, उसको ये मालूम करने की जरूरत नहीं, FedEx को भी मालूम करने की जरूरत नहीं कि उसका content क्या है. Maybe secretary ने एक छोटा सा note उसके ऊपर लिख दिया हो कि ये अपने CEO को दे देना, वो note भी FedEx वालों के लिए जो है वो is useless for them. They shouldn't have any interest in that note. Okay, so the one thing which is important here, the lowest level has the most packaging, and there is a specific reason I say that. पहले let's understand what that means. That means कि CEO ने तो सिर्फ एक लेटर लिख दिया था, एक पेज के ऊपर लिख दिया था, सेक्रेटरी ने उसको पैक किया एनवेलप के अंदर, में भी अपना नोट उसके ऊपर लगाया, तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया. फिर FedEx वाले ने उसके ऊपर एक अपना बड़ा एनवेलप लगा दिया, ठीक है, मे बी उसके अंदर कुछ और भी लेटर डाल दिए, तो और ज्यादा बड़ा हो गया. सो दैट मींस लोएस्ट लेवल के ऊपर ये पैकेजिंग जो है वो ज्यादा हो गई है. एंड द रीजन दैट आई से दैट इज कि इंटरनेट में भी एग्जैक्टली ऐसे होता है. एट द हाईएस्ट लेवल यू विल हैव सम एप्लीकेशन डेटा जिसको पैकेट करेंगे, और फिर उसमें हम कोई, जिस तरह सेक्रेटरी ने एक एनवेलप लगा दिया है, इसी तरह हम उसके ऊपर कोई हेडर लगा देंगे, और फिर FedEx वाले को देंगे, which means कि उससे लोअर लेयर को देंगे, वो उसके ऊपर अपना एक और हेडर लगा देगा, which means कि as you process sending end के ऊपर, this is your sending end के ऊपर, as you move down the layers, packaging जो है वो बड़ी होती जाती है. बिल्कुल exactly इसी तरह आपकी इंटरनेट के केस में भी होता है, as you move down the layer. So by the way, ये layers कहां पर होंगी? ये layers सारी की सारी जो है ये मेरी मशीन के अंदर है, ठीक है. If I am using my computer to send to and using a web browser, तो ये सारी layers जो है, ये सारी layers मेरे कंप्यूटर के अंदर है. इसी तरह दूसरे एंड के ऊपर जहां रिसीव होती हैं, ये भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी सारी layers उस तरफ है. And we will exemplify that. ठीक है. In the internet, the decomposition is in the following: two things which will be obviously visible to us, and we run into those every day. ये हमने पहले भी एक एग्जांपल दी हुई है कि one is the physical transfer of bits from one end to the other end, left से right तक, ठीक है. And then there are applications which talk to each other. Means your web browser talking to a web server, and they understand the same language. The guys here, they understand the same language. Then there are many other layers in between. यहाँ पर आपकी multiple layers हैं which are in between in the internet architecture. Now somebody might question कि ये 3 layers क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, ठीक है. So the designers, they came up with these layers. In fact पहले 3 से ज्यादा होती थी, अब उन्होंने break down करके जो है उसको 3 में कर दिया. Waqas, you want to ask a question?
नो सर, सॉरी वो गलती से मिस। ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम. Okay, so at the highest layer we have applications, at the lowest layer we have physical transfer of bits. Both of these are experienceable by us. We can view those. ठीक है. जो दरमियान वाली 3 layers हैं, we can't view those, but I will explain that to you. So what are those layers? First of all, we have the, just above the physical transfer of bits, we have a layer which is best effort local packet delivery. And when I say local, I will keep this definition of local. We will keep this definition of local a little bit hazy for now. We will make a crisp definition maybe after half of the semester is over. उसके बाद ये इसकी definition crisp होगी. लेकिन समझने के लिए यूं समझने के जैसे for example within your house it is local network. एक सारे लोग एक ही वाईफाई के साथ connected हैं. So one computer talking to the other computer is your local network. LUMS at some point in time 10-15 साल पहले LUMS used to be a single local area network. All the deliveries on campus used to be, not anymore, used to be local packet delivery. Local packet deliveries होती थी. बेशक SSC बिल्डिंग से हम लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर भेज रहे हैं या मेन एकेडमिक ब्लॉक में कुछ भेज रहे हैं, it used to be local delivery until they revamped the entire network architecture. उन्होंने बहुत सारे राउटर्स लगा दिए यहाँ पे और local packet delivery जो है वो नहीं रही across the campus. So still in portions of the campus there is local delivery. So for example, from my office to the office next door, जो delivery होगी पैकेट की, most likely it would be a local packet delivery. Maybe किसी का कोने वाला ऑफिस है वो भी शायद local packet delivery होगी. On another floor in the SSC building, it may or may not be the local packet delivery. Depend करता है कि हमने नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है. So, but we also need not just local packet delivery, we also need what we call a global packet delivery. I want to make sure that anyone in the world with an internet connectivity with an IP address should be able to receive the data that I send and should be able to send data to me. Okay? So best effort global packet delivery. I'm using these words best effort here. What that means is कि ये नेटवर्क अपनी कोशिश करेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे FedEx अपनी कोशिश करता है कि आपका एनवेलप डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे. अगर FedEx मेल लूज कर जाए, आंधी तूफान आ गया, मेल जाया हो गई, हो जाती है कभी, sometimes it happens. बिल्कुल उसी तरह पैकेट्स के साथ sometimes it happens, packets might get dropped. Why? Because you can get overload in the network. पैकेट ड्रॉप हो सकती है. FedEx के ट्रक से सामान जो है वो समंदर में गिर सकता है, ठीक है. पुल से जा रही हैं और समंदर में पैकेट गिर गया. These kind of things happen. इसी तरह इंटरनेट के अंदर we do know that there is statistical multiplexing. There are buffers in the switches. Buffers can get overloaded. Buffers can get filled up, and the packets may need to be get dropped. So we will make sure कि हम अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन there is no guarantee that whatever you send will reach at the other end. Okay. So what is underneath the application and above the global packet delivery? It is called reliable transport, reliable or unreliable transport. Iski kya job hai? This guy is equivalent to your secretary, equivalent to the secretary. So for example, in our department, there is a secretary who handles the mails for all the faculty members. So there can be many different applications here. एक CEO हो सकता है, एक VP हो सकता है, एक सेक्रेटरी है उन सबका, कॉमन सेक्रेटरी. उस सेक्रेटरी का ये काम है कि जब मेल रिसीव होती है तो वो डेस्टिनेशन तक दे देगा, या सीईओ को दे देगा, या वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा, या मैनेजर को दे देगा, या किसी को दे देगा. एग्जैक्टली उसी तरह जैसे यहाँ पे एक सेक्रेटरी है इन आवर डिपार्टमेंट, वो जिस भी फैकल्टी मेंबर के लिए मेल आती है वो उसके पास लेके चला जाता है, उसको दे देता है, ठीक है. Similarly, for the sending side, you have one common secretary who is handling many different applications. Exactly इसी तरह इंटरनेट के अंदर हो रहा है, many different applications, trusting or depending upon one secretary, जिसका काम ये होगा कि वो
वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन को जो है वो डेटा उनसे लेगा या रिसीव करेगा या डिलीवर करेगा, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि how these applications are configured or are interacting with others. बिल्कुल उसी तरह जैसे CEO secretary से बात करता था. Does the CEO need to talk to the FedEx guy? No, the CEO does not need to talk to the FedEx guy. So the application will only talk to the secretary. The CEO will only talk to the secretary. The secretary will talk to the FedEx guy. और FedEx का किससे वो करेगा? वो FedEx के उस बंदे से जो है वो राब्ता करेगा जो ग्लोबल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर इंटरनली FedEx वाले किस तरह डिलीवरी करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सो वी डोंट नो कि how the FedEx network might be configured. हो सकता है FedEx किसी और तरह से करता हो, TCS किसी और तरह से करता हो. In the case of internet, there is only one way of doing that. But since there are many different networks, many different ISPs, and we do know that if I send a packet from here to Europe, there will be many different ISPs which will get traversed. यहाँ से वहां तक बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके नेटवर्क के ऊपर से पैकेट होता हुआ जाएगा. वो अपने नेटवर्क्स को उन्होंने कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है. One thing that will be common is that everyone will be talking the IP protocol, which is at this layer, best effort global packet delivery. Why is that? Because global delivery के लिए आपके पास एक global address होना चाहिए, and in the case of internet, that is the internet protocol, IP protocol. ठीक है. Some examples of protocols at the application layer, you will have heard of these. HTTP होता है इसके ऊपर, FTP protocol होता है, and many other protocols, SMTP, DNS, etc. All of these are application layer protocols. There are protocols at the transport layer. The secretary talks to the secretary. When I say application layer के ऊपर ये protocol है, that means these are the languages that the CEO will be using to talk to the other CEO. The secretary does not need to understand that language. Okay? The secretary does not need to understand that language. ये HTTP इस किसी और को understand करने की जरूरत नहीं है. Only the application layer needs to must understand it. Okay? So similarly, the secretary will be talking to the secretary. They will be speaking the same language. They will be speaking the same language. And the example of that language are TCP. Many of you, or probably all of you, have heard the name of TCP. UDP is another example. Okay. Similarly, for global packet delivery, the FedEx guys, they will be talking to each other, using internet protocol IP. So we typically use the TCP IP or UDP IP. What that means is you have a TCP protocol running over the internet protocol. Yet these are two separate protocols on two different layers. And then underneath IP, you can have, again, many different types of protocols. You can have Ethernet, Wi-Fi, HDLC, SDLC, etc. Many different options. Okay, and then you have the physical transfer of the bits. एक bit आपकी जो है वो उधर जाएगी. उसके लिए आपको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं. उसके लिए कम्युनिकेशन इंटरफेसेस जो हैं, they need to understand each other. Okay, उन्होंने bits जो receive करनी है. So these applications, we do know that the CEO need to talk to the secretary. CEO ने वैसे तो दूसरे CEO से बात करनी है, उसका मेन गोल ये है कि दूसरी एंड के ऊपर CEO से वो बात करेगा. But in order to facilitate that conversation, in order to send the letter to the other CEO, उसने अपने secretary को वो letter देना है और कहना है कि ये please दूसरी साइड पे भिजवा दो. So that means there has to be some way for the applications to talk to the transport layer. उनको ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ बात करनी ही करनी है. वो कैसे बात करेंगे? By using some programming interface, and that interface is called a socket interface. So what that means is that TCP software in your machine, every Windows machine, every Linux machine, every Mac, every iPad, every iPhone, every Android phone would have, जिसको भी इंटरनेट के ऊपर जाना है, would have the TCP code built in, will have the UDP code built in. ये इनके कोड लिखे हुए होंगे. They will expose
a set of functions, जिसको हम API बोलते हैं. They will expose a set of functions to the applications, and the network applications can be written by application programmers. किसी ने Facebook की एप्लीकेशन लिखनी है, किसी ने Instant Messenger की एप्लीकेशन लिखनी है, किसी ने Skype की एप्लीकेशन लिखनी है. They will be using those socket interfaces, socket APIs, which have been provided by the TCP layer, transport layer, UDP layer. Transport layer ने वो ऊपर expose की हुई है applications को. It's just like कि किसी ने एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी लिख दी है और अंदर उसने फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन कर दी है, और वो फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो अंदर हैं उसके, और डेक्लेरेशन उसकी जो है वो आपको एक्सपोज कर दी है कि these are the functions you can call and you can do your job. You don't need to implement those. I have implemented those for you. So इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो इंप्लीमेंटेशन कर दी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेक्रेटरी ने कहा है कि जी ये आप बेल करके मुझे बुला ले, मैं आके आपकी बात सुन लूंगा, और फिर उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो लेटर दूसरी साइड पे दूसरे सेक्रेटरी को पहुंच जाए. ठीक है. सो similarly, this socket interface is a set of functions. It's a set of functions which have been exposed by the transport layer to the application layer. Normally, the application programmers, ये हमारी एक दो programming assignments से होंगी जिसमें आपने Python के अंदर कोड लिखना होगा. You will be writing these network applications which will be talking to the transport layer, और transport layer आपको expose हुई भी होगी, वो API आपको expose हुई भी होगी, whether you are writing it in Java or C or Python or any other language which supports network communication. Okay. So the secretary then will need to talk to the FedEx guy. वो internally कुछ होगा. So this piece of code, which is best effort global delivery, ये piece of code जो है ये भी आपकी machine के अंदर exist करता है, ये भी आपकी machine में exist करता है. Best effort local packet delivery, ये भी आपकी machine में exist करता है. Every computer would have that. Physical transfer of bits also. ये सब की सब जो है ये आपकी machine में exist करती हैं. But they will need to work with somebody else. ये एक network के साथ ये connected है, एक physical interface के साथ ये connected है. So that means किसी और के साथ वो बातचीत करके उन्होंने ये सारे functions को जो है completely accomplish करना है. So FedEx का जो network operate कर रहा है वो ऐसे नहीं है कि FedEx का जो ऑफिस जो है वो मेरे पास वाला जो ऑफिस है वही सारा काम कर देगा, नहीं. Internally they have functions which will make sure कि each FedEx office is able to talk to any other FedEx office in the world. Okay, वो वहां तक चला जाएगा. हो सकता है उन्होंने हायरार्की के अंदर जो है वो किया हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ग्लोबल डिलीवरी और लोकल डिलीवरी को हमने एक हायरार्की बना ली है कि लाहौर के अंदर जितने FedEx ऑफिस हैं वो एक उन्होंने डेजिग्नेट किया होगा एक FedEx का ऑफिस कि ये वाला जो FedEx का ऑफिस है ये लाहौर से बाहर की सारी डिलीवरीज करेगा. विद इन लाहौर डिलीवरी के लिए हम लोकल ऑफिस को यूज कर लेंगे, और आउटसाइड लाहौर डिलीवरी के लिए हम ये ग्लोबल FedEx के ऑफिस को यूज कर लेंगे. ओके. So the secretary will be talking to the FedEx network whatever way it is configured, and this will be built on. You will not, as a network applications programmer, you will not need to worry about कि ये TCP या UDP ये किस तरह से IP के साथ बात करते हैं. Every computer would be doing that. ठीक है. And these global delivery is built upon the local packet delivery. And why is that? Because think about it. Global delivery का क्या मतलब है कि I can send a packet from here to Europe. Local delivery का मतलब ये है कि I can send that packet from here to somebody on this floor, maybe a switch on this floor. उस switch को मैंने local packet delivery के through उस switch को मैंने अपना डेटा भेज दिया, वो एक पैकेट भेज दिया जो मुझे एप्लीकेशन ने दिया था through a secretary, through TCP एक एप्लीकेशन ने दिया था, वो मैंने डेटा जो है इस स्विच को भेज दिया, लोकल डिलीवरी कर दी. Now this local delivery is not sufficient to take the data all the way to Europe. So इस local delivery के बाद एक और local delivery होगी, because the switch on my floor is directly connected to, has a local connection with the switch in the basement of SSE building. And the switch in the basement of SSE building will do another local delivery to a big switch in the library building, जहाँ पे IST का office है. And the big switch in the IST building will do another local delivery. So ये बहुत सारी local deliveries आपस में concatenate होंगी. किसी एक local delivery को दूसरी local delivery के बारे में नहीं पता होगा.
So many of these local deliveries concatenated together, will make a global delivery. ठीक है? तो सेक्रेटरी ने जब फेडेक्स से बात की थी, उसने कहा था कि ये आपने दूसरे सिटी भेजना है. उसने ये नहीं कहा था कि भाई ये लोकल डिलीवरी करते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या होगा. नहीं, ये सेक्रेटरी का काम नहीं है, ये फेडेक्स के इंटरनल मामलात हैं कि वो किस तरह से करते हैं. सो नाउ वी हैव दीज लेयर्स. हर लेयर का नाम भी फिजिकल लेयर है, एंड देन लोकल पैकेट डिलीवरी के लिए डेटा लिंक लेयर है, एंड देन वी हैव network layer for global packet delivery, and at the network layer you have addresses which are called IP addresses, and then we have transport layer which works like a secretary जो बहुत सारी applications से data ले रही होगी. So you can see that on your machine you can run multiple network applications. कोई फाइल डाउनलोड की हो सकती है, कोई वेब ब्राउजिंग की हो सकती है, कोई चैट की एप्लीकेशन हो सकती है. many different applications which are using network services, connectivity को इस्तेमाल करती हैं. all of those applications will be talking to the same secretary जो transport layer के ऊपर आपका या TCP होगा या UDP होगा. You have actually two secretaries. इन दोनों के थोड़ा फर्क काम है. We will explain that in some more detail. But really both of these secretaries are at the transport layer. एक secretary कुछ ज्यादा specialized है, दूसरा जो है वो कम specialized है. And then you have applications running at this what we call layer 7. And the reason that we call it layer 7 is because वो पहले layer 5 और 6 भी बीच में होती थी, जो इंटरनेट डिजाइनर्स ने कहा था. अब उन्होंने कहा कि नहीं, वो इतनी कम फंक्शनैलिटी है कि वो हमने layer 7 और 4 के अंदर ही दी है. So we used to have this presentation layer and session layer which have been incorporated into the transport layer mostly, and to some extent in the application layer. Okay. So what are layers? Is a part of a system with well-defined interfaces to the other parts. One layer interacts only with the layer above and the layer below. CEO ने FedEx से बात नहीं करनी है. So secretary ने CEO से बात करनी है और FedEx के उससे बात करनी है जो उसके नजदीकी ऑफिस में है. उसको FedEx के पूरे नेटवर्क में किसी से बाकी और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है. So you can only talk with the layer above or the layer below. Layers को bypass नहीं करेंगे हम. ठीक है. So interaction only through the interface between them, and that interface could be a programming interface such as a socket interface in which you have an API, a set of functions which are exposed by the transport layer to the application layer, or a network application programmer उस API को use करके वो लिख देता है. ठीक है. So now protocols and layers, as we said, there are 5 layers here. Communication between the peer layers in exactly the same way जब हमने कहा था कि CEO is only interested in talking to the CEO. Ultimate goal उसका ये है, CEO से बात करनी है. ये और बात है कि उसको secretary की मदद लेनी पड़ती है. So original goal of this application is to talk to this other application. ये आपकी एक end के ऊपर है, A के ऊपर, और ये दूसरे end के ऊपर है, B के ऊपर. So this application wants to talk to this application. Your web browser wants to talk to CNN.com server or Facebook.com server or ESPNcricinfo.com server. ठीक है. इसके लिए इस एप्लीकेशन, चूंकि ये एप्लीकेशन 2 मुख्तलिफ मशीनों पर रन कर रही हैं, they have no direct connectivity, उन्हें अपने secretaries की मदद लेनी पड़ेगी. So this application will get help from the transport layer. All of these layers are on your computer. And similarly, all of these layers are running on a far-end computer जिसके ऊपर एक web server run हो रहा है. ठीक है. So communication between the peer layers on different systems, system A and system B, is defined by protocols. ठीक है. So CEO talking to CEO, secretary talking to the secretary, FedEx में one guy talking to the other guy, उनके data link के ऊपर जो नीचे hierarchy के ऊपर है, talking to the other guy. And similarly physical delivery, and you can well notice here ये physical delivery जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी एक hop में हो जाएगी. अगर मैंने यूरोप तक भेजना है तो we do understand कि there will be switches in between. और वो switches जो हैं उसके ऊपर आपने ये एक switch होगा, ये दूसरा switch होगा, and there will be links here. ये दरमियान में ये links होंगे. In fact, we don't have these links here. असल में तो फिजिकल लिंक ही होता है. तो ये नेटवर्क भी जो है, नेटवर्क लेयर की कम्युनिकेशन भी जो है वो इन्हीं फिजिकल लिंक्स पे होती है. Why? Because
just like the application was taking the services from the layer below to talk to the other application, उसी तरह नेटवर्क जो है वो नेटवर्क से डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा, वो नेटवर्क जो है वो नीचे वाली से हेल्प लेगा और नीचे वाला फिजिकल से हेल्प लेगा। असल ट्रांसफर ऑफ बिट्स जो है वो लोएस्ट लेवल के ऊपर फिजिकल लेयर के ऊपर हो रही होगी। ये इस राउटर के पास जाएगी, स्विच के पास जाएगी, ये स्विच डिसाइड करेगा किधर भेजनी है, डेस्टिनेशन वाली साइड के ऊपर कौन से आउटगोइंग इंटरफेस पे भेजनी है, फिर नेक्स्ट स्विच को भेज देगा एंड नेक्स्ट, मे बी देयर आर 10 स्विचेस इन बिटवीन until you reach the destination machine, जहां पे आपको physical bits मिल जाएंगी और physical bits then will be passed on to the data link layer, to the network layer, then to the secretary transport layer, all the way to the specific applications. वो secretary देखेगा ये कौन सी application को मैंने data देना। बिल्कुल उसी तरह जैसे if you have multiple network applications running and you receive some data for one application, तो जो TCP का कोड आपकी कंप्यूटर पे रन कर रहा है उसने ये डिसाइड करना है कि कौन सी नेटवर्क एप्लीकेशन को डेटा देना है। यू डोंट वांट योर वेब ब्राउजर डेटा जो व्हेन यू गो टू www.cnn.com वहां से जो डेटा वापस आ रहा है आपको वो ब्राउजर में डिस्प्ले करवाना है, ये नहीं कि वो आपके कोई इंस्टेंट मैसेंजर की विंडो के अंदर वहां पे डिस्प्ले हो जाए, राइट। सो स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आपने वो डेटा देना है, ठीक है। सो वी हैव आई थिंक वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर in the next lecture. Next lecture में continue करेंगे. If there are any questions, we'll be happy to answer. कोई question है? Sir, I have a question. जी, please go ahead, Mohsen. Sir, I have some curiosity about the circuitry of a switch with multiple input ports and multiple output ports, specifically with the incoming traffic. Agar, sir, my curiosity is about how the switch interprets multiple incoming packets that are coming simultaneously. Yani ki, polling architecture kis tarah ka hota hai? If you could sort of give me a general sense about it. So, if you have a switch with multiple interfaces, first of all, when you say that simultaneously arriving packets on a single interface cannot arrive simultaneously. Packets on a single interface cannot arrive simultaneously. Packets on two different interfaces can arrive simultaneously. Okay. First of all, we have to be very clear about that. ये sense बनाती है इस बात की? Sir, may I slightly expand on the question? जी. Sir, यही सवाल था कि multiple interfaces से multiple packets आ रहे हैं, लेकिन वो packets simultaneously आ रहे हैं. तो in order to make sense of it और उसको queue में डालने के लिए it has to be interpreted by a single interface. उस sense में बात कर रहा था. Sure. Single interface नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. So if you open up your computer, उसके अंदर एक network card लगा होता है, ठीक है, जिसमें आप तार लगा देते हैं, you know. So there is network card. So ये जो router होता है या switch होता है, इस switch के अंदर उस तरह के बहुत सारे नेटवर्क कार्ड लगे होंगे. इनफैक्ट एवरी इंटरफेस वुड बी अ नेटवर्क कार्ड जिसमें वो आप केबल प्लग इन कर देते हैं. वो जो नेटवर्क कार्ड होता है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है. ये काफी हद तक जो है ये पूरे स्विच से इंडिपेंडेंट होता है. तो इसके अंदर एक मेमोरी भी होगी और रिसीविंग सर्किट भी होगा. इस एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर देयर कैन बी ये ट्रांसमिशन होगी, बिट्स आपकी रिसीव करने वाला होगा, पैकेट्स को जो है वो चेक करेगा कि पैकेट्स का डेटा जो है उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं हो गई है, फिर उसको स्टोर भी कर देगा, देयर विल बी सम मेमोरी हियर, और फिर उसके बाद जो है वो स्विच को प्रेजेंट करेगा. सो दैट मींस दिस गाय विल बी, लेट मी जस्ट चेंज द कलर हियर, this network interface card will present a packet to the switch fabric after it has, you know, done some basic error checking वगैरह, कुछ ना कुछ कर ली होंगी, ये भी प्रेजेंट कर देगा. Now these two guys can simultaneously present the packets to the switch, can simultaneously do that. I think, and your question is about कि what happens, switch किसको जो है वो करेगा. The switch will have a processor. यहाँ पे एक उसके पास प्रोसेसर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है. आप दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर रहे हो तो क्या करता है वो? टाइम शेयरिंग करता है ना. Yes. एक सीपीयू साइकिल के अंदर तो एक ही काम हो सकता है. You know, so that means कि this guy will
poll all the network interfaces, और ये मैकेनिज्म जो है ना वो डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का स्विच है, बहुत सस्ता वाला स्विच है, मीडियम टाइप का स्विच है, या बहुत एक्सपेंसिव स्विच है। बहुत एक्सपेंसिव टाइप का जो स्विच होगा उसके अंदर आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन एक मीडियम अप टू अ मीडियम टाइप ऑफ स्विच, व्हाट इट कैन डू इज दैट इट कैन गो अहेड एंड पोल ऑल ऑफ दीज इंटरफेसेस, जितने उसके इंटरफेसेस हैं उनको पोल कर सकता है, और उनके पास जितने पैकेट्स पड़े हुए हैं बफर, उन्होंने अपने पास बफर किए हुए हैं हर इंटरफेस ने, और वहां से पैकेट उठा के उनको प्रोसेस कर सकता है, वन आफ्टर द अदर। Understood, sir. ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ से स्किप कर गए हैं, लेकिन अब वेरी क्विकली आई विल टेल यू कि ये जो प्रोसेसर है ये भी हो सकता है कि वो हर जगह से पैकेट्स उठा के एक शेयर्ड मेमोरी के अंदर डाल दे, और फिर उस शेयर्ड मेमोरी से जो है ना वो पैकेट उठा के प्रोसेस कर दे कि मैंने हर पैकेट को जो है वो कौन कौन से आउटगोइंग इंटरफेस पे भेजना है। So this is called a shared memory architecture. ये जनरली जो है ये बहुत फास्ट नहीं होता, मिड एंड काइंड ऑफ राउटर्स में $5,000-6,000 का राउटर आएगा, उसके अंदर शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर हो सकता है, या उससे सस्ता जो होगा उसमें शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर हो सकता है। उसके बियॉन्ड जो राउटर्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वहां पे हम शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर नहीं यूज कर सकते, एंड उसकी रीजन ये है कि शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में ये मेमोरी की जो स्पीड होती है बॉटलनेक बनती है। हमने लेक्चर के अर्ली पार्ट के अंदर ये कहा था कि आपके पास 3.2 नैनो सेकेंड्स हैं अगर 10 गीगाबिट पर सेकंड 100 गीगाबिट पर सेकंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं टू प्रोसेस अ पैकेट एंड सेंड इट फॉरवर्ड। ठीक है, तो 3.2 नैनो सेकंड के अंदर यू कैन नॉट हैव अ शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर जहां पे बहुत सारे इंटरफेसेस एक शेयर्ड मेमोरी में लिख रहे हैं, वो तो बॉटलनेक आपकी मेमोरी की बस की बैंडविड्थ ही बन जाएगी वहां पे। ठीक है, सो इन दैट केस you will need to use some other space division type का architecture which we don't know what it is. Maybe जब हम चैप्टर 4 के अंदर जाएंगे कुछ थोड़ा सा इसका आइडिया होगा, बट स्विच आर्किटेक्चर इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग। वो पूरा बहुत डिटेल के अंदर हम इस कोर्स में नहीं पढ़ सकते, उसके लिए पूरे अलग कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, बट we will get a sufficient idea कि हमें जो है ना ये स्विच के इंटरनल्स का थोड़ा थोड़ा पता चल जाए। Does that answer your question? Yes, sir. Exactly what I wanted. ठीक है, थैंक यू। any other question? किसी और का क्वेश्चन? जी गुलाम मोहिद्दीन सर, वो लिटल्स लॉ के अंदर आपने हमने जो डिफाइन किया है, हमने पैकेट्स डिफाइन किए हैं जो वो मेमोरी में हम कर रहे थे, उसको स्टोर कर रहे थे। हाँ, तो उसके अंदर सर हमने वो बिट्स या उसमें क्यों नहीं डिफाइन किया? क्योंकि पैकेट्स की लेंथ तो वेरी कर सकती है ना। कर सकते हैं। ये जो L is equal to lambda W है, ये L is the average length of the queue and W is the average waiting time of the packet. ये length of the queue जो है वो in terms of packet है, ये W जो है ना waiting time of the packet है। मैं पैकेट का साइज आधा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ना ये और ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और आधा कर देता हूँ और आधा कर देता हूँ, एक पैकेट को मैं 1 बिट तक ले जाता हूँ, मैं 1 बिट को ही 1 पैकेट कहना शुरू कर देता हूँ, तो दिस लिटल्स लॉ विल बी एप्लीकेबल इन दैट केस एज वेल। तो बिट लेवल के ऊपर भी ये इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो अभी हमने वो लेयर्स पढ़ी हैं, तो इसके अंदर आपने बताया कि वो जो लेयर्स होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं हर डिवाइस के अंदर। हर डिवाइस के अंदर तो मेरा सर इसमें क्वेश्चन ये था कि जैसे कि टाइम इवॉल्व हुआ है तो टेक्नोलॉजीज भी इवॉल्व हुई होंगी। श्योर। तो उसको फिर कैसे ये टैकल करते हैं, ये हैंडल करते हैं? अपडेट्स आती रहती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपडेट आती रहती है। ये वाला जो कोड है ये टिपिकली वेरी स्टेबल, ऑलमोस्ट नेवर चेंजेस। ठीक है, ये इसके अंदर जो है ये भी ऑलमोस्ट नेवर चेंजेस। ये नीचे वाली चीजें जो है फर्मवेयर और हार्डवेयर के अंदर है, ऊपर वाली लेयर्स ये मोस्टली सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। सो ये काफी रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर है, लेकिन अपडेट्स आती रहती हैं। फर्मवेयर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आप ऑटोमेटिकली इस तरह नहीं करेंगे, इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। सो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट आती रहती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर अगर कोई लेट्स से सिक्योरिटी इशू है, कोई सिक्योरिटी होल है, उसके पैचेस आते रहते हैं, वो आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है वो हर थोड़े अरसे के बाद जो एक मैसेज दे देता है ना कि नया वर्जन आ गया जी, इंस्टॉल कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है। प्रोटोकॉल वही रहता है बाय द वे, उसकी इंप्लीमेंटेशन के बग्स जो हैं वो फिक्स होते हैं,
प्रोटोकॉल के अंदर चेंज नहीं आती है। प्रोटोकॉल जो है हमने फाइनलाइज किया होता है बड़ी एफर्ट के बाद, 2-3 साल लगे होते हैं, 4 साल लगे होते हैं, उसके बाद जो है वो एवरीवन एग्रीज के इट्स द सेम प्रोटोकॉल दैट आवर डिवाइसेस विल बी टॉकिंग। ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन हो? ऑलराइट, then I will stop the share and the session. Will upload the video as soon as I get a chance, maybe later today or tomorrow morning. ये slides भी हम upload कर देंगे on the LMS website. I think everyone will get the email.